Oh, very good, warm good morning, children. I hope you remember we did Living and Growing Differently, page number 13 and page number 14 till rainforests. We did till rainforest. Recap. We are just doing a recap. I've already explained you this chapter when we were doing extra marks classes. So we are just doing a recap. Chapter 2, Living and Growing Differently. Now take out page number 15, that is marshes. Marshes have wet and clayey soil. They have got, what type of a soil does marshes have? Marshes have clayey soil. This soil holds a lot of water and very little air. But mangrove trees are very well adapted to grow here. Such roots need to breathe air. Mangroves have special roots that grow above the water and help in breathing. Now, can you see this mangrove trees? Okay, this mangrove trees, they grow only in clay soil. सॉइल थोड़ा सा चिपचिपा होता है, क्ले सॉइल मुल्तानी मिट्टी जैसा होता है, क्ले सॉइल चिपचिपा होता है. ये इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर, पानी बहुत अंदर रख लेता है और हवा एयर जो होता है उसमें बहुत ही कम होता है. और तब क्या होता है, दिस मैंग्रोव ट्रीज नीड टू ब्रीथ. सांस लेने के लिए मैंग्रोव ट्रीज के जो रूट्स है वो स्पेशल रूट्स होते हैं जो ऊपर आ जाते हैं. सो इन मार्शेस mangrove trees are grown and they have clay soil. Next is desert plant. You know very nicely, you are also staying in a desert. Plants growing in deserts have special ways of coping with extremely dry climate. Let us study the cactus. You must have seen cactus. When we were doing this chapter, I showed you the cactus also. In the desert it rains short, बारिश बहुत कम होती है, तो कैक्टस को द कैक्टस प्लांट है स्प्रेडिंग रूट टू सोक अप दिस रेन. तो उनके जो रूट्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं. और कैक्टस कैन स्टोर वाटर इन इट्स स्टेम. जो उसकी आपको ये स्टेम दिख रहा है ना, दिस इज़ नॉट लीफ, दिस इज स्टेम. इसी में ये अपना पानी स्टोर करता है. एंड कैन यू सी दैट थॉर्न्स, पतले पतले से जो कांटे दिख रहे हैं, दैट इज़ देयर लीव्स आर टर्न्ड इनटू थॉर्न्स so that water is used less. To save water from being lost by evaporation from leaves, cactus leaves change into thorns. The plant can make food in its stem, which also has chlorophyll. Thorns protect the cactus against the animals who want to eat the juicy stem. और जैसे कोई एनिमल देखता है, उनको ये स्टेम खाने का मन करता है, तो ये जो कैक्टस के ऊपर जो थॉर्न्स है, कांटे हैं, वो उसे बचा लेता है. और स्टेम इनका जो है वैक्सी होता है. वैक्स देखा आपने मोमबत्ती का कैसा चिकना सा होता है ना, उसमें कोई भी पानी आप डालो वो सोखता नहीं है. सो कैक्टस ट्री प्लांट हैज ऑल्सो कॉल्ड अ वैक्सी स्टेम. नाउ next we are going to do is aquatic plant. Many kinds of plants grow in water. They can be put into three groups. Aquatic plant को हम three groups में डालते हैं. Floating plant, the plants are very light, their roots are not fixed in the water. बहुत light होते हैं floating plant. उनके roots जो होते हैं fixed नहीं होते हैं, ऊपर ही. float का मतलब है तैरना, ऊपर ही तैरता रहता है. Thus, the whole plant, including the roots, can float. These plants use sunlight and carbon dioxide from air to make food. Duckweed and water hyacinth are floating plants. Floating plants कौन कौन से होते हैं? Duckweed और water hyacinth. Next is the underwater fixed plant. जैसे fixed मतलब अंदर fix है वो. These plants are held in place by their roots that grow in the water bed. Water lily and lotus are two such plants. Their stems are long, hollow and light. उनके stem होते long, hollow and light होते हैं. The stems reach the surface of water. वो stem जो है पानी के surface तक पहुँचता है. Leaves and flowers which grow from the top end of the stem floats upon water. जो लीफ और फ्लावर है वो ऊपर ही ऊपर तैरता है. देखो लोटस के लीफ एंड फ्लावर, अभी मैं आपको वो लोटस की पिक्चर दिखाऊंगी. Leaves and flowers which grow from the top end of the stem float upon water. The leaves are broad with stomata on top surface. इनके जो stomata होते हैं जो breathe करते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं? leaves stomata से. तो stomata top surface में होता है, so that
water does not block them. They take in carbon dioxide from the air. I'll show you water hyacinth. Can you see the leaves of water hyacinth spongy as they have air in them? This helps them plants to float. आपने अगर वाटर हाइसिंथ देखा होगा तो उसकी जो लीव्स होती है वो बड़ा स्पंज टाइप होता है, मोटा मोटा सा होता है. कैन यू सी लोटस प्लांट, सो ब्यूटिफुल. और कितना लॉन्ग है उसका स्टेम और नीचे जा रहा है. और उसके रूट्स देखो, द रूट्स लाई विद इन द वाटर बेड. ठीक है, दिस इज वन इज वाटर हाइसिंथ, सेकेंड इज the lotus plant. They are the aquatic plants. Aquatic plants means plants which grow in water. Now this is tape grass. Children, this is tape grass. Can you see tape grass? So this is tape grass. Now children, this tape grass is underwater plant. This is also underwater plant. Such plants, example hydrilla and tape grass, grow totally underwater. ये पूरी तरह से underwater रहते हैं, ऊपर दिखते ही नहीं हैं. उनके leaves narrow होते हैं so that they can bend in flowing water. वो bend हो जाते हैं flowing water में. They have no stomata. इस water ये जो underwater plant है hydrilla और tape grass, इनके कोई stomata नहीं होता है. तो अब आप पूछोगे हाउ डू दे ब्रीथ? दे एक्सचेंज गैसेस विथ वाटर इन अ स्पेशल वे. कैसे एक्सचेंज करते हैं? वाटर कंटेन्स गैस इन डिजॉल्व फॉर्म. पानी के अंदर डिजॉल्व गैस होता है. दीज प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज डिजॉल्व इन वाटर. पानी के अंदर जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है उसको यूज़ करता है ये प्लांट. दे यूज़ दिस गैस फॉर फोटोसिंथेसिस. वो यही कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस फोटोसिंथेसिस में काम लेता है. फोटोसिंथेसिस मतलब the process of making food of plant is called photosynthesis with the help of sunlight, water and air. When underwater plants give off oxygen during photosynthesis, the gas also dissolves in water. Dissolved oxygen is useful for the aquatic animals who use it while breathing. अब ये जो टेप ग्रास हुआ, ये जो लोटस हुआ, ये लोग जो भी अपना ऑक्सीजन छोड़ते हैं, when they are using making when they are doing photosynthesis, that time they release oxygen and that oxygen is used by the aquatic animals. In this way they help each other. So I hope you have understood. So today we'll be doing only page number 15 and 16. Doing the recap. We have already done all this. It's just a recap. That's why I'm doing a little bit faster. But still I have taken 7 to 8 minutes to finish this video. So I'll be sending you PDF. I've already sent you one PDF of that 2 pages. Please do it. Learn them part by part because exam is coming very fast. Final examination. I want everyone to get more than 95%. God bless you. Take care. Have a nice day. Thank you.